ஹலோ சத்குருபாகி எல்லாரும் அமைதியாக இருக்க வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சிறிது நேரத்தில் நமது ஜெயந்தி உற்சவம் தொடங்கும். எல்லாரும் அவ இடத்துல இருக்கையில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Sri Guru Namaha. Smriti Sudi Puranam Alayam Karnalayam Namami Bhagavadpada Sangaram Lokasangaram Adhyanam Jnanavedittam Vidyadittam Vivekanam Sarvetam Sakaranditam Bharadidittam Asri Bharati Padabarulam Bharati Padamosunam Bharati Padabarulam Bharati Dattapatri Vidya Vinaya Sambandam Vidarakam Vivekanam Bande Vedanta Shastras Vidasekara Bharati. Our Shastanga pranams at the lotus feet of Swamiji of Shankara Mutt Ramarajatla and our humble pranams to Acharya Shri Shankara Kalyan Raman, founder Brahma Vidya Mandir Chennai, and Namaskaram to all. I welcome you all for the 56th year celebration of Shankara Jayanthi, coinciding with the 27th year of Mahalotram, commencing from tomorrow. And also we are very much grateful to our Swamigal. So whenever we approach for inauguration of any function, he immediately accepts without any hesitation also. And also our regards to Mr. Acharya Rangaji, in spite of his busy schedule, he has allotted time and we have and accept our invitation for provision for 3 days. So it is a good opportunity for Kolkata also. And for further proceedings, I hand it over to Mr. our colleague Zayuti Kaki to proceed further. Shri Guru Namaha. It does give a very immense pleasure once again welcoming in this August spiritually laden atmosphere of Shankara Hall to the Adi Shankaracharya Shankara Jayanthi Utsavam 2023. Every year we look forward to this wonderful event, and it is not even required to even assert a point that without Adi Shankaracharya, none of us will be here present in this august institution. It is because of him we are all here. So as our secretary mentioned, first my pranams to His Highness Saraswati Swamiji and Guruji Rangaji for coming all the way from Chennai to be with us with his disciples. That adds to the wonderful glamour of the whole thing. And I welcome you all for this wonderful program. And we begin the event with the invocation song by students of Sri Guru Ghana Vidyalaya Kolkata, Kumari Amrita Sriram, Kumari Kripa Shivaram, and Kumari Roshni Ramakrishnan. Hello, she is Sai Kripa. Thank you. Bhajare loka gurum, Bhajare loka gurum, Manuja 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 bhajare loka gurum,
आर्याम्बामुख पङ्कजभानुम् आर्याजानि पदाम्बुजभृङ्गम् आर्याम्बामुख पङ्कजभानुम् आर्याजानि पदाम्बुजभृङ्गम् नित्य नित्य विवेचन चतुरम् नित्य नित्य विवेचन चतुरम् सत्याद्वय चिन्तन निरतम् नित्य नित्य विवेचन चतुरम् सत्याद्वय चिन्तन निरतम् भजरे लोकगुरुम् मनोजा भजरे लोकगुरुम् मनोजा भजरे लोकगुरुम् दण्डकमण्डलू मण्डितपाणिम् दण्डकमण्डलू मण्डितपाणिम् पण्डितपामर वन्दितपादम् दण्डकमण्डलू मण्डितपाणिम् पण्डितपामर वन्दितपादम् शङ्करमाश्रित जनमन्दारम् शङ्करमाश्रित जनमन्दारम् किङ्करभारती तीर्थसुसेव्यम् शङ्करमाश्रित जनमन्दारम् किङ्करभारती तीर्थसुसेव्यम् भजरे लोकगुरुम् मनोज भजरे लोकगुरुम् मनोज भजरे लोकगुरुम् 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 That was a wonderful composition by none other than our own Mahasannidhanam, Sri Bharati Tirtha Swami Head, rendered by disciples of Sri Guru Brahma Vidya. We are extremely grateful to the Vidyalaya for providing year after year students to give the invocatory song in the Shankara Jayanthi program as well as the Navaratri and all programs of the Shankara Hall, programs in the Shankara Hall. And now we will have the Vedic invocation by Veda Vidyarthis of the Shankara Hall.
सरस्वतीं अवामहे कविं कवीनामुपमश्रमस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद नश्चिन्मन्नोदिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं स्वस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ॐ आपमापवः सर्वाः अस्मादस्मादिगो मुदः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च योऽसोदुदं नुदेति सर्वेषां भूतानां प्राणानादायो देति मामे प्रजायामा वसूनां मामम प्राणानादायो दगाः असौयोस्तमेति सर्वेषां भूतानां प्राणानादायास्तमेति मामे प्रजायामा वसूनां मामम प्राणानादायास्तङ्गाः असौव्य आभूर्यते सर्वेषां भूतानां प्राणैराभूर्यते मामे प्रजायामा वसूनां मामम प्राणैराभूरिष्टाः असौव्यो वक्षीयते सर्वेषां भूतानां प्राणैरवक्षीयते मामे प्रजायामा वसूनां मामम प्राणैरवश्चेष्टाः अमूनि नक्षत्राणि सर्वेषां भूतानां प्राणैरवसर्पन्ति सोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा वसूनां मामम प्राणैरवस्कृतमोऽस्कृपद इमे मासाश्चार्धमासाश्च सर्वेषां भूतानां प्राणैरवसर्पन्ति सोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा वसूनां प्राणैरवकृतमोऽस्कृपद इमरुदवः सर्वेषां भूतानां प्राणैरवसर्पन्ति सोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा वसूनां मामम प्राणैरवस्कृतमोऽस्कृपद अयगं संवत्सरः सर्वेषां भूतानां प्राणैरवसर्पति सोत्सर्पति च मामे प्रजायामा वसूनां मामम प्राणैरवस्कृतमोऽस्कृप इदमहः सर्वेषां भूतानां प्राणैरवसर्पति सोत्सर्पति च मामे प्रजायामा वसूनां मामम प्राणैरवस्कृतमोऽस्कृप इयगं रात्रिः सर्वेषां भूतानां प्राणैरवसर्पति सोत्सर्पति च मामे प्रजायामा वसूनां मामम प्राणैरवस्कृतमोऽस्कृप ॐ भूर्भुवस्सुवः एतद्वो मित्रं मानो मित्रहुं त्वं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः त्रिरङ्गैः सुष्ठुवागुं स्वस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्तिः हरि ओम्।
This was Vedic invocation by the Veda Vidyarthis at the Shankara Hall. Needless to say, our Upanishads, while it is always has the message of how to reach the supreme goal of realization, self-liberation and all, it does teach us how to lead a life of humility, and also it tells us within various passages the high values with which a human life can be led. I mean, even in the Shanti Mantra, we only see that kind of a spirit. O Devas may be here with our ears, what is auspicious. I mean, it's always invoking the Devas to see what is auspicious, to hear what is auspicious, lead a life which is auspicious, and that is a kind of spirit the Upanishads always teach us. It is not that everybody will have to, all of us naturally cannot seek to realize the supreme goal, but yet in our day-to-day life also we can apply the values that are inscribed in the Upanishads. So after the Vedic invocation by the Veda Vidyarthis, we will have the Stotra recitation by the Sharada Mandali. Thank you. प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता सञ्जीवयेत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्नाम् अन्यां तत्सचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुमूर्तये नानाचित्रघटोत्तरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यक्षति चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामेति तवेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाणपि चलां बुद्धिं दशून्यं विदुहुं श्रीबालान्धजडोपमात्मकमिति भ्रान्ताभृशं वादिनगम् मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नागोग्रस्तदिवाहरेन्दुसदृशो मायासमच्चादनात् सन्मातर्हरणदो योगोषुषुप्तपुमान् प्रागस्वाप्तमिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्यपि जाग्रदादिषु तदा सर्वास्वस्थात्वभि व्यावृत्वा स्वनुवर्तमानमगमित्यन्तस्फुरन्दं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोधि भजदा यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं कार्यकारणतया सस्वामि सम्बन्धदः शिष्याचार्यतया तदैव पितृभो याध्यात्मना वेदतः स्वप्ने जाग्रति माय एष पुरुषो माया परिभ्रापितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्बां सनलों निलोमम्बरमगर् नादों हिमां शुक्पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं
नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः नामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदग्धमनना ध्यानार्थ सङ्गीतनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्वाधीश्वरत्वं सदः सिद्धे तत्पुनरष्टता परिणतम् ऐश्वर्यमव्याहतं वटपिटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदाधारमाराध त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःख छेददक्षं नमामि चित्रं वडधरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिक्षा चु छिन्न संशयागा अंगुष्ठदर्शनी योग विद्यानां दर्शयन्नो वदा शिवाः शुद्धां ब्रह्म विचारचार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां वितततीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शृङ्गेरी पुरवासिनी स्मितमुखीं सम्पूर्णज्ञानप्रदां अमृतरूपिणीं सुखकरीं सन्मार्गसिद्धिप्रदां सर्वालङ्कृतशास्त्रसारपरिदां श्रीशारदा देवीम् अहं नित्यम् इच्छामि तत्पदं सुरनुदं देवी जगन्मोहिनी वन्दे शारदपादपङ्कजनिधिं वन्दे कलां वन्दे लोकपवित्रजननीं वन्दे कलापोषिणीं वन्दे जन्मजरामरणदुःखहरिणीं वन्दे सदा पूरणीं वन्दे चिन्मयी वन्दे सदा निर्मलां सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सदा सेन्दुबिम्बां सदा नोटबिम्बां भजे शारदाम्बा मजसम्मदम्बा भजे शारदाम्बा मजसम्मदं मुद्रा कलाभेदिनिद्रां कलाभै सुभद्रां पुरस्त्रे विनिद्रां पुरसुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बा मजसम्मदम्बा भजे शारदाम्बा मजस्रम्मदम्बा ललामाङ्गबालां लसत्कानलोलां स्वभक्तैकबालां यशश्रीकपोलां करे दक्षमालां कनकरत्नलोलां भजे शारदाम्बा मजस्रम्मदम्बा भजे शारदाम्बा मजस्रम्मदम्बा सुसीमन्दवेणीं तृषानिर्जिदैनीं नमत्कीरवाणीं नमद्वज्रवाणीं सुधामन्दरास्यां सुधासिन्ध्यवेणीं भजे शारदाम्बा मजस्रम्मदम्बा भजे शारदाम्बा मजस्रम्मदम्बा सुसान्दां सुदेगां त्रिगन्धे प्रसान्दां लसत्सल्लदाङ्गीम् अनन्दामचिन्त्यां स्वरन्दामसै सर्गपूर्वस्थितां भजे शारदाम्बा मजसम्मदम्बा भजे शारदाम्बा मजसम्मदम्बा
कुरंगे तुरंगे मृगेन्द्रे गगेन्द्रे मदाळे मदेपे मघोषेधिरूढा महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां भजे शारदाम्बामजस् भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बा सुसृङ्ग्यानैवन्नीं जगन्मोहनाङ्गीं भजन्मानसाम्बोज शुभ्रान्द्रबिङ्गीं निजस्तोत्रसङ्गीतनृत्यप्रभाङ्गीं भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बा भजे शारदाम्बामजस्रं मवन्द शिशानादेव लसन्मन्दहासप्रभावक्रचिह्ना शलच्चञ्चलाचारुताडङ्गकर्णां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बं भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बं भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बा. Stotra recitation by the Sharada Mandali very aptly chose the Dakshinamurti Stotram and the Sharada Bhujangam for this wonderful occasion. And now I welcome our dear Narayan Mama, Sri J.S. Narayanan, President Shankara Hall, to give the welcome address. Thank you. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे सर्वय गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं. विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योद्धौर्यारक्षामानिधिं सदाशिव सदा अभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थं गुरुं भजे. भारतीकरुणापात्रं भारतीपदभूषणं भारती परमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये. विद्याविनयसम्पन्नां वीतरागं विवेकिनां वन्दे वेदान्तचित्तस्यात् विदुशेखरभारतीम्. His Holiness Swamiji Pragnanananda Saraswati, Acharya Shri Rangaraja Rangarajan Kalyanaraman, ladies and gentlemen, I wholeheartedly welcome you all for the inauguration of Sri Shankara Jayanthi celebrations 2023, the 27th Maharudra Yajnam. This institute was founded by Sri P. Subramaniam in the year 1960 to propagate the teaching of Adi Shankaracharya, Jagat Guru, and we have completed 63 years by now. During these years, we received several dignitaries specialized in the art, in this philosophy and art. We were
constrained to slow down our activities due to the COVID situation for 3 years, and with the cooperation of all of you, we expect to increase our activities in the years to come. For the Maharudram, we have got districts from Chennai, New Delhi, Bangalore, Pune, Rajamundry, and they have all come as is done every year. I would welcome all of the retreats wholeheartedly. Also, I welcome all the special invitees and Sri Mehta was supposed to come, but he is unable to come because of illness. Thank you very much. And Thank you, Mama, for your blessings for the conduct of the Jayanti Utsavam 2023. I just would like to add one thing, that this August institution was founded on 17th of April 1967 by none other than Mahasenidharam Sri Abhinav Vidyachitta Mahaswamihal, right in this premises, was accompanied by Sri Bharati Ditta Mahasenidhanam, and the first patron member was our then President Sri S. Radhakrishnan. So that is the August institution where we are sitting today. And now we are we have come to the very important aspect, the inauguration of Sri Adi Shankara Jayanthi with lighting of the lamp by Pujya Swamiji and Guruji Rangaji, please. Thank you, Swamiji and Guruji, for inaugurating this wonderful event, and we take immense pleasure in honoring the guests, our respected Swamiji and Guruji. Mama.
We are now honoring our respected Guruji Ranganji. Venkatesh, konjam mulla. Thank you. Really, we are missing Sri Shankarlal Mehta today. And now we come to another very important aspect of the Shankara Jayanthi Utsavam, where Acharya Shri Rangarajan Kalyan Raman will be giving his wonderful discourse on SANKARAATHMAKAM. He is the founder of the Brahma Vidya Mandir in Chennai, and he is doing a wonderful service for the spread of the Sanatana Dharma, and his disciples are thronging to him for listening to his wonderful exposition of the scriptures, the Vedas, the Upanishads, and I now request Sri Ranganji to address us. Thank you. ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ऋकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ It is indeed a very blessed occasion for me personally and also for all the people who have come along with me from Chennai to be present in a very, very auspicious place amidst the busy, bustling Kolkata traffic, Kolkata happenings. One small group of people, we are here to think about our roots, the real root. One is the family root that we always think about. Which family do we hail from, and who is our father, who is our forefather, great-grandfather, etc. Which place we hail from. So all these things that we think about whenever we think about our roots. But today we are just going to go a little further and think about the cultural and the knowledge-based root that we belong to. So every human being has a footing with respect to his physical body. The physical body comes from a particular family. The subtle body, which consists of two things. One is the cultural person that we are, and the knowledgeable person that we are. சரியா? எமோஷனலாகவும் சம்ஸ்காரத்தினுடைய ரீதியில் நாம் யார், அப்புறம் அறிவினுடைய அடிப்படையில் நம்ம யார், உடம்பினுடைய அடிப்படையில் நம்ம யார். இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் பண்ணாதான்
only when we get the answer to these three basic questions. Bodily, physically, what is my root? Traditionally, culturally, what is my root? Intellectually, knowledgeably, what is my root? Only if I answer these three questions, the Shastras will show me the path to find the actual root. Okay. These three questions, when answered, will actually make you feel that you belong not just to a small family, you belong to a huge Rajyam. Rajyam means a huge kingdom. Currently, we can say that we all today belong to the Karnataka Rajadhani Simhasanedeshwara, and our immediate Mahasannidhanam Shri Shri Bharati Tirtha Mahaswami. Let us all think and do a smarana in our mind for a minute about him, and very ably, capably, and like a Surya Koti Prakasham, we have our next successor, Shri Shri Sannidhanam Vidushekara Bharati. And it is just like, no, one sun is appearing in the sky and the other sun appearing as a reflection in the water. The two Sannidhanams are blessing us here amply and totally. So let us take a minute to think about them and do our Shashtanga Namaskarams to them and then proceed with this. We have all seen that in all the invocations that we were happening, everyone was reciting shlokas about Guru. One is the Sadashiva Samarambham. We had our prayers offered to Lord Dakshinamurti or Sadashiva. We had our prayers offered to Adi Shankara Bhagavatpada. We had our prayers offered to Sri Abhinava Vidya Tirtha Swamigal. We had our prayers offered to Mahasannidhanam. We had our prayers offered to Sannidhanam. So if you see, like the flow of Ganga, which starts from Gomukh and goes up to, this is the place where Ganga becomes Sagar, Ganga Sagar. So this Avichinna Parampara, Avichinna means that which is unbroken, continuous, perennial, like how Ganga is not broken anywhere and it just flows to take a form of Mahasamudram. Similarly, right from Sadashiva, this Guru Parampara has been flowing and continuously flowing and ensuring that each one of us can take a holy dip in this Mahaganga and cleanse all our papas. The first level of cleansing of our papas happens by answering the three questions. What are the three questions? I just uttered, I forgot. Number one, bodily, as a family heritage, where do we belong to? Culturally, from a samskara ritya, where do we belong to? And third one, Moonavadana, intellectually, where do we belong to? Now, as the Guru Parampara, they are charged with enormous responsibility as the torch bearers of Sanatana Dharma to show us the light, to answer these questions and get to a stage where we will not have any more questions to be asked. That is the whole goal of the mankind. The whole goal of the mankind is what? That we don't have any more questions to answer. Jignasa paripurnatara nivartihi. We don't have anything to ask. What came from that? Why this is happening? Why this is not happening? All such jignasa have to go. And the very purpose of Vedas, the very purpose of human birth, what is it? Ananda Praptihi, Paramananda Praptihi, Swarupa Avatishtanam. Right? So these are the main thing
for which the gurus stand as the torch bearers. They show you the way, they make you walk the way, and they ensure that you realize the purpose of your journey. Okay. Now, in this whole avichinna parampara, the parampara, when a parampara will be avichinnavat? Avichinnavat is when something will be unbroken and continuous. Any family practice that we have at home, when will it be continuous? Is it by the knowledge of the practice it will be continuous, or is it by the following the practice which is making it continuous? The answer is both. ஒன்று அனுஷ்டானம் இருக்கணும், அனுஷ்டானத்தோட சேர்ந்து அனுஷ்டானத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற தாத்பரியமும் தெரிஞ்சிருக்கணும். தாத்பரியம் இருக்கணும், தாத்பரிய ஞானம், அனுஷ்டான ஞானம், இது ரெண்டும் இருந்ததுன்னா அந்த எனி பரம்பரா, எனி விஷயத்தினுடைய அனுஷ்டானம் அவிச்சின்னமாக தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு. இப்போ நம்ம வீட்டு குழந்தைகள், அவர் ஜெனரேஷன் கரண்ட்லி they are not interested in any kind of anushtana. Why? Because the last generation or the previous generation were not able to give them the tatparyam behind the anushtana. It is not that the anushthanam is not prolific enough to take care of itself. It is because the anushtata, the dharmi did not have adequate dharma jnanam, so that the dharma marga pravartanam or pravartakam did not happen. Therefore, currently, one of the key responsibilities that each one of us should have is, let us also, apart from following our traditional values and systems, let us also understand why we do certain things, so we do not slip away from our responsibility of handing over to the next generation. Okay. Given this, today the topic that is given to me, which I wanted to talk, is SARVE GURAVAHA SANKARAATHMAKAM. Being Shankara Jayanti's inaugural function, I want to take this particular occasion to think and dwell upon Shankara in his very essence. What Shankara really means to each one of us. Why Shankara is remembered even after hundreds of years today. Why there is a huge celebration for Shankaracharya today. And how Shankaracharya is relevant to me in my day-to-day life from the time I wake up in the morning until I go to bed. Don't you think it is very important for us to understand this? Yes. So, Shankaracharya, one of the key Ashtotra Namavali that can be attributed to Shankaracharya is Sampradaya Pravartakaya Namaha. Sampradaya Pravartakaya Namaha. So that takes us to the next question as to what is a sampradaya? What is a sampradaya? Also, at the end of this session, we should be able to understand as to why we call everyone in this lineage who comes as Shankaracharya. Have you ever noticed? We call the first Shankaracharya with the name what? Adi Shankaracharya. After that, whoever comes in that lineage, we call them with the name Shankaracharya. Why does each one of the gurus who come in this lineage take the name Shankaracharya? Answer to this particular question, the sampradaya that we need to understand, and our personal responsibility towards the next generation. These three things have one single answer, and that is my attempt in the talk today.
A sampradaya is a particular way that is followed so that a particular objective is achieved in its true sense and its complete sense. ஒரு விஷயமானது எந்த விஷயம் எந்த நோக்கத்துடன் செய்யப்படுகிறதோ, எந்த பலனை கொண்டு செய்யப்படுகிறதோ, அந்த நோக்கமும் அந்த பலமும் இரண்டுமே நிறைவாவதற்கு காலத்தினாலோ எதனாலோ மாற்ற முடியாத அளவுக்கு எந்த வழிமுறையானது கற்பிக்கப்படுகிறதோ அதை சம்பிரதாயம் என்பார். A sampradaya is one that is not affected by the changes of time or any other changes, and still no matter the time and the place, it achieves its intended objective, and it achieves its intended objective completely. Now with Adi Shankaracharya, given the name of Sampradaya Pravartakaya Namaha, what does it mean? Adi Shankaracharya actually revealed, established and broadcasted the most important sampradaya that mankind needs. Every single day mankind needs what mankind needs. That understanding and that way of life is what Adi Shankaracharya did not propound, did not invent, did not find out. Shankaracharya revealed. Shankaracharya popularized. Shankaracharya did pracharam of. That's all. The key point that we have to note here is Shankaracharya did not invent a sampradaya. Though we call Adi Shankaracharya and we call all the gurus who have come as Shankaracharyas, and whenever we ask, we say that we belong to the Shankaracharya lineage, we belong to the Shankaracharya family. While we talk about all these things, Shankaracharya by Adi Shankaracharya by himself did not invent a sampradaya. Shankaracharya mainly is known for what? How is Shankaracharya known for? I have asked this question to many people wherever I go. Many people have many interesting answers. People say Shankaracharya na koodu uttu koodu pairavar. Avarukku adallam theriyum. Parakaya pravesha nipunaha. Oh, very good. Ashtama siddhi irukaravar. Yes, Ashtama siddhis. Oh, okay. Then what Shankaracharya has done sthapanam of 4 matams. He has gone to many temples. So these are all the various prabhavams of Shankaracharya that many people say. But when Shankaracharya, when we talk about Adi Shankaracharya, the one thing that should immediately come to everyone's mind is this one shloka, even Ardha shloka. Brahmam Satyam Jaganmithya Jivo Brahmaiva Naparaha. This Ardha Shlokam, Ardha Shlokena, Samasta Vedanta Saram Ardha Shlokena Vakshamaha. Brahmam Satyam Jaganmithya Jivo Brahmaiva Naparaha. Later it is also taken into the Vedanta Dindima text saying that Iti Vedanta Dindimaha. So Vedanta, what is Vedanta? Vedasya Antam, the end of Vedas. That is a very crude translation for Vedas. What is Veda? Wisdom. What is Vedanta? End of wisdom. Vedamna அறிவு, வேதாந்தம்னா என்ன? அறிவனோட முடிவு. அப்படின்னா என்ன? அப்படி புரிஞ்சக்கூடாது. எங்க அறிவு நிறைவாகுமோ, it is not end, rather it is completion. எங்கு அறிவு நிறைவாகுமோ, where knowledge takes its intended object and it completes a person's journey, that is the fruit of Vedanta. So
ஸோ வேதாந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து சிரமான வேத சிரமாக இருக்கக்கூடிய வேத அந்தத்தை தான் ஆதி சங்கராச்சாரியர் அதிகமாக வந்து இது பண்ணார். அந்த வேத சிரமாக இருக்கக்கூடிய வேத அந்தத்தினுடைய தாத்பரிய நிர்ணயம் வந்து சாமான்யமாக இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேதாந்த பரமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ஒர்க்கையும் பண்ணிட்டு போயிருக்கார். Just that every person has to realize his goal of life as envisioned by the Vedanta. Shankaracharya has done so much of literary works that will make one person capable of understanding Vedanta and also realize the goal of Vedanta. Now, this is not an easy task. You go on the road and ask somebody, what do you want? He will say, I want a taxi. Right? You go to your friend's house and you ask, what do you want? He'll say, I need a good job. I am not liking this current job. To the same person you go after 2 months and ask, he will say, you ask, what do you want? He will say, I want to get married. I want to have a good wife. So, the one question that mankind is not able to answer is what I want. To put the question more accurately, what I really want. This Balaka, Shankara, saw the human problem. He saw the human problem. This human being is wanting so many things. And he also achieves so many things. But one thing that does not stop with respect to human being is the very wanting. The wanting person does not cease to exist. Many wants arise, many wants fulfill, many wants get dispelled. But the wanting person continues. If the wanting person is the basic human problem, then what is the solution? The solution is very simple. You have to be free of being a wanting person. Correct? வேட்கை உடையவனாக இருப்பது பிரச்சனையாக இருக்குமேயானில் வேட்கை அற்றவனாக இருப்பது மோட்சம். இல்லவா? இப்போ வேட்கை அற்றவனாக இருப்பது மோட்சம் அப்படின்னா எதை கொடுத்தால், giving what, achieving what, the wanting person will completely vanish. This was the thought of Shankara. And for this there was a small incident in his life where Shankara used to watch movies. You know that? Adi Shankaracharya used to watch movies. What movie did he watch? At that time there is no this cinema theater and all. He used to go to a Natakam. And he watched a Natakam called Nachiketa. And it used to happen for 10 days, 12 days, 18 days, that Nachiketa drama used to happen. He was so engrossed in that. When Yamadharmajaja comes and he declares how crude he is with people and how he is merciless taking away people. Even if you tell Yamadharmaraja, please give me 2 more days, my green card has yet to come. Let it come, then I will come. No, Yamadharmaraja will not listen. He'll say, I just now booked my tickets to US, let me go and come back, then I will come. Yamadharmaraja will not listen. So he was so engrossed and he was waiting for the next day Natakam. The next day Natakam got cancelled. Shankara was upset. He asked, why, what happened? And he saw a huge procession going. He asked, what happened? No, he is dead, therefore no Natakam. Who is dead? Yamadharmaraja is dead. That was a trigger for Shankara. Oh, can there be death to the death? Can we create death to the... சாவுக்கு ஒரு சாவு கிடைக்குமா? சாவுக்கு சாவு இருக்குமா? அப்படி, in that manner, when Shankara started thinking, he found that
It is not the worldly things, worldly experience or worldly changes that is going to take away this wanting person. What is that? That I am a wanting person, iti moodaha manyate. Aham ichuhu, aham alpaha, aham deenaha, iti moodaha manyate. Ennadu? எனக்கு வேணும், எனக்கு ஆகணும், ஏதோ ஒன்று மாறணும். The wanting person, that I am a wanting person is a misnomer, is a misconclusion about myself. Now, when there is a misconception about someone, what is the solution for that? Removal of. For example, I have kept my watch here. Mama takes it. How can I misconceive that? Mama ku watch pudichirukku polukku eduthuntar. He takes it and puts it in his pocket. How can I misconceive it? He has taken my watch. Okay? Then I remove this and see actually my watch is here. Then I realize that he has actually taken his watch. So, the solution for a misconception is right understanding. So, this basic human problem of that I am a wanting person, if that is a misconception, what is the right solution? To understand that aham purnaha, aham nityaha, aham shuddhaha, aham ananda swarupaha. Now, that is the very content of Upanishad. If this Upanishad message, if this Upanishad Jnanam has to reach, if this Upanishad message, Upanishad Jnanam has to reach the mankind solving the human problem, what does the mankind need? Number one, right understanding through proper knowledge. Number two, the right personality who can grasp this knowledge. So if you take Shankara's entire work, for example, let us take Govindashtakam. What is Govindashtakam? Govindashtakam is a hymn in praise of Lord Govinda. But how does that Govindashtakam start? Satyam jnanam anantam nityamanakaram paramakaram. So Shankara starts with the very aim of any stotram. We had the Sharadamba stotram here. We had Dakshinamurti stotram here. We had stotra recitation. In every stotra of Shankaracharya, the human goal of moksha, that is pramana janyam, jnana janyam. Moksham is jnana janyam. Jnanathanala, it is only through right understanding that moksha happens or moksha is revealed. And how does knowledge happen? This is where Shankara plays yet another great role. Inge yarkala moksha venum. Who all want moksha here? Some people seem you don't want moksha. You are afraid. I know why you are afraid to raise your hand. Because we have an idea, moksha means death. Because we have that card coming to our house saying that our moksha padaviyai அடைந்தார். அப்புறம் வந்து சுபம் வந்து இந்த இடத்துல இன்னைக்கு நடக்கிறது அப்படி. So even to ask for moksha, we are so doomed in ignorance that moksha means death. Moksha is not death. Moksha is your very nature. When? Not after understanding. Moksha is your very nature yesterday, day before yesterday, today as you listen, and forever. Then what is this knowledge doing? We don't know that our Swarupam is moksha. We don't know that we are Ananda Swarupam. We cry because we are Ananda Swarupam. We feel bad because we are Ananda Swarupam. We do not accept certain things because we are Ananda Swarupam. Because
We want everything to be the way we want. We want to be with ourselves. But only the means that we adopt is wrong because we take ourselves to be the wanting person. Therefore, moksha janakam, mokshasya upayam kim. What is moksha's upayam? Upayam means how can moksha happen? Moksha can happen by the knowledge that I am already done and fulfilled. If this understanding has to come, how can understanding happen? Understanding can happen with only one way. How is that? Only by studying. If you think if you can do japam, nama sankirtanam, that can give you understanding, no. It will make you a person capable to understand. It is like washing the plate and making it fit for having a good big thali. But it is the food that will quench the hunger. So what Shankaracharya did is, he gave methods and way of life for making us capable for receiving the knowledge. And number two, actually Shankaracharya elaborated the way in which this knowledge should be given, this knowledge should be understood. இந்த ஞானத்தை எப்படி கற்பிக்க வேண்டும், இந்த ஞானத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முறையை தெளிவாக காலத்தினால் அழியாத முறையை விளக்கமாக எடுத்துரைத்ததனால் அவர் சம்பிரதாய பிரவர்த்தகாய நமஹ. How it should be taught, how it should be understood, so that the intended objective is achieved and the intended objective is completely achieved. That methodology what Shankara brought to light, and this is called Sampradaya. In Chandogya Upanishad, there is a Drishtanta. Drishtanta is, there is an example. It says that if you are lost in a dense forest, and you have lost your way, what is the best thing to do? What is the best thing to do? Why forest? The goal park is very big, no? We from Chennai, if we go to that park, we will lose our way, correct? What is the best way? Ask someone. Tad vijnanartham sa gurumeva bigacche. I don't know whether you have watched the Mundaka Upanishad session in the Sringeri Kolkata's Facebook channel. If not, it is still there, you can go and watch. Saha gurumeva abhigachet. Kimartham vijnanartham. To know, go to a guru. Okay. The guru will teach you. Now this is where the importance of Sampradaya comes. Why not I study from a book? Upanishads are there. It is printed left, right and center. Every person writes a commentary on Upanishad. Why can't I read that commentary and understand? Because not just the meaning of the words will give the knowledge. Meaning of the words have to be understood in a particular manner. I will give you a small example. A translation of Ishavasya Upanishad. Ishavasya Upanishad is coming in with which Vedam? Shukla Yajur Vedam. The Shukla Yajur Vedam, the Upanishad has to start with a Shanti Mantra. The Shanti Mantra, most of you would have heard, is Purnamadaha Purnamidam. One Pandit from Bengal, he is a Bengali Pandit, I don't know his name. He translated it for an Englishman. That is full, this is full. And from the full, if you take away the full, what remains is only full. This is not a bad translation. It is a word-to-word translation. You take the Sanskrit dictionary
You look at it, you will be able to see that the translation is almost accurate. That is full, this is full. And from full, if you take away full, what remains is full. Have you become a Mukta Purusha now by understanding this? Since we know English and the English word, it will give us a feeling that we have understood. But that is not understanding. Understanding is able to relate to my notion of self and able to relate to dispel the problem that is centered on the self. And that is where Sampradaya has its hand. Without Sampradaya, if you try to even attempt anything, there are three kinds of problems that happen. Number one, Tattva Apraptihi. That is what needs to be understood in the true sense, in the true content, will not be understood. Extending the same example on Ishavasya Upanishad. Taddure tadvandike. It is far, it is near. Anoho anyan, mahatoho mahiyan. Tad anuhu, tad mahat. I want to understand Brahman. What is my stop? Only touch point, Upanishad. And how is the Upanishad defining Brahman? It is small, it is the big. It is near, it is far. How will you even comprehend this? So, it is not just the words, the meaning of the words. It is a faculty is required where the human mind, the Shishya's mind is understood and the knowledge of the Upanishads are made relevant to the way the Shishya is thinking. And now, this thinking of a samsari and the knowledge of the Upanishad, the thing that actually brings both of these things together is the Sampradaya. And the Sampradaya can only be handled by a human mind which knows the knowledge, which also knows the samsari shishya. And that person is called a guru. Ukarastvandakaro vai rukarasthannivartakaha andakara ajnana andakara nirodhitvata guruhu iti abhidiyate. So Bhagavad Pada, Adi Shankaracharya, saw that the Vedanta, Upanishads, they have the ultimate, the final solution for the human suffering. And also saw that a need for re-establishing, bringing to the light the profound sampradaya is required. Because at the time of Shankaracharya's time, you should try to imagine, or at least try to see in your vision, that there were n number of people trying to take you to moksha. You come with me, give this bali, do this yaga, they will go to moksha. Or Nirishwaravadis on one side, Bauddhas on one side, Shanikas, Shunyavadas on one side, and our own, when I say our own, Purva Mimamsakas on one side, yoga people on one side. How many people are, many of us here will still think that by yoga we will get moksha. Please be educated that yoga will only give you the eligibility for moksha. Shankaracharya does not negate any yoga or Sankhya or
Tarka or Nyaya Vaisheshika, Shankara does not negate them. Shankara only throws light to show that what they are useful for and how much they are limited. Where do they stand and what is their limitation? And that Siddhanta Rupa. It is Sadhana Rupa. Yoga is good. Yama Niyama Asana Pratyahara Dhyana Samadhi. Have you heard it somewhere? In Guru Vandanam it comes. So all this is required. Ashtanga Yoga Siddhi. It is required. For what? For the mental disposition to receive this knowledge. But can Ashtanga Yoga in itself give moksha? Does not give. Using Ashtanga Yoga, become a patra for moksha, then Guru Mukhena, Tatvidhi, Pranipatena, Pariprashnena Seva. If there was one other way, then other than understanding this knowledge, don't you think Krishna would have used it on Arjuna? Krishna is Sarveshwaraha, Jagadoddaraha, etc. He is everything. Purna Avataram Krishna. Don't you think by touch of his finger, he could have given Brahmajnanam to Arjuna? Why he did not give? Because it cannot be given. Brahmajnanam has to be taken from a guru. Ganga will keep running. You cannot sit here and say, Ganga water is not coming to me. You have to go take a dip. Similarly, you have to go to the Guru, express your samsara and show your commitment that you are sure that for your samsara, knowledge is the solution. Then Guru will automatically start operating. He has no other choice than to do Upadesha. So, this Sampradaya, this particular thing, Adi Shankaracharya, he was a great missionary. You can, whatever words that you can attribute today to various great people, all put together, if you want to give it to one person, that is Adi Shankara Bhagavat Baba. So what is the essence of Shankara? The essence of Shankara is the person who is Sampradayajnaha, Sampradaya Pravartakaha, Sampradaya Prakashakaha. What we understood as Sampradaya, he knew that Sampradaya, he walked that Sampradaya and he revealed that Sampradaya to entire mankind. And in the very form of revealing the Sampradaya, so many Durmatas were automatically drove away from our country. And the most challenging, I should say, the most challenging for Shankara was Purva Mimamsaka. There was one Purva Mimamsaka, Karmata. He was so much into karma that the Shuka or the parrot in his house used to talk about Purva Mimamsa Sutras, Jaimani Sutras. And Karmatas, generally they avoid the sight of a sannyasi. They don't want to even look at a Niragni because he has given up Agni. But Shankaracharya had this burning desire in his heart. That burning desire of a jnani is called compassion. Anukampa. The very Anukampa, you know what he did? He did not go, it is a story. He did not go through the regular route. He went through the back side. Madil Shavari Agri Gudichu Ulla Ponar. He is a Kerala person, so he will definitely know how to climb a coconut tree. And he went before Mandana Mishra and asked,
எனக்கு வாத பிச்சை கொடு. Give me a chance to argue with you. And you know the story. Mandana Mishra, the argument happens. Who becomes the judge? Ubhaya Bharati. Ubhaya Bharati becomes the judge. And Ubhaya Bharati, Shankaracharya, personified as Mata Bharati herself. And you know who won and what final challenge was given to Shankara. Thank God he had lot of Astama Siddhis. So he used Astama Siddhis and he was able to establish, he was not able to just establish, he was able to make Mandana Mishra understand. And you know what was the condition for this Vada? If Shankara loses, what Shankara should do? He has to take up Grahastha. If Mandana Mishra loses, he taking sannyasa is okay. But just imagine the risk, the highest risk that Shankara took of his life. He took that risk because of the conviction on the Vastu Jnana. The Vastu Brahman, Etat Idagam Sarvam Kalu Idam Sarvam Brahma. That conviction and that anukampa made him win over, not just win over, he graduated Mandana Mishra from being a Karmata to become a Purna Vedanti. Naishkarmya Siddhim Paramam. Have you heard this word somewhere? It comes in Bhagavad Gita. Mandana Mishra takes up sannyasa and becomes, what was his name? Shureshwaracharya. Shureshwaracharya does a grantha called Naishkaramya Siddhi. He addresses the Brahman Vastu with a name called Naishkarmya. All that you have been doing in this Janma, all that you have done in the past Janma, and all that you have still have plans to do, nothing is going to take you to fulfillment. That doesn't mean you should stop doing what you are doing. Don't have the attitude of fulfillment from a karma. Do karma for whatever are your needs, but for fulfillment, for contentment, for purnatvam, jnanam eva sadhanam. So, if a proper sampradaya is not propitiated, if it is not properly handled, number one is tattva apraptihi. What you have to know, you will not know. The vastu luptamaidam. Luptamaidam na, you will not get the vastu. You will not understand what should be understood. The other problem of not being in sampradaya is you will understand something else as the vastu or tattva. That is a bigger danger. And that danger, that difficulty still Bharata Desham is facing. That which is not tattva is taken as tattva. Knowingly or unknowingly, majority of people are today charuvakas. Yavat jivet, sukam jivet, bhrunam kritva, Ghrutam pibet, basmi bhutasya dehasya punaragatanam kutaha. If I explain the meaning of this shloka, you will all feel very comfortable with this tattva. You got this one life, one body. Why do you bother about anything, dharma, adharma, whatever it is? There are hundreds of people on the road ready to give you loans. Take loans. If possible, pay EMI. Else say you cannot pay. And just keep pulling yourself and you will go away one day. That's all. So as long as you are there, just focus on enjoying the life. It's a very interesting and attractive proposition. But samsara will continue. Anyway, so tattva apraptihi.
So tattva apraptihi is one problem. Second thing is atattva praptihi. That which is not tattvam. Viparya prapti. Third problem is that the intended result, samsara nivartihi, purnananda praptihi, jivan mukti, that you will not get. Prayojana, nishprayojanatvam. So, if you are not focused on the methodology in which knowledge is given to you, the very purpose of the knowledge is not achieved, and you will also not even get the knowledge. That is the role of sampradaya. So Shankaracharya, now the final point is Shankaracharya the creator of the sampradaya? And this is Shankaracharya, Adi Shankaracharya. He is not the creator of Shankaracharya. Narayanam, Padmabhuvam, Vasishtam, Shaktimcha, Tatputra Parasharancha, Vyasam, Shukam, Gaudapadam, Mahantam, Govinda Yogindra, Atasya, Shri Shankaracharya. Then what? Vartikakaram, Totakacharyam, Sureshwaracharyam, Padmapadam. Then what? Asmat Guru Varyaha. What do you see before you? What do you see before you? In Kashaya Vastra, Mahasannidhanam, Sannidhanam, they are in the same lineage. That means the Sadashiva or Narayana, who is the very knowledge, the essence of Narayana is the essence of the person you are seeing. Therefore, our Sureshwaracharya, I say our Sureshwaracharya because Sureshwaracharya is Pitadishwaraha, Pratama Pitadishwaraha for which Pitam? Sringeri Sannidhan. So our Sureshwaracharya also did a huge work called Manasollasa, which is a commentary on the Dakshinamurti Stotram that they just recited. And for that Manasollasa, Sureshwara writes a Dhyana Shloka in which it says, Ishwaraha Guru Atma. Ishwara, the Lord, Parameshwara, Guru, my Guru, and Atma, myself. Ishwaro Guru Atma iti Murti Beda Vibhagire. It is only by Murti that it is different. However, like bedroom, kitchen and living room, though they are divided by a wall, they are all one space. Vyomavat Vyapta Dehaya, and that Vyomavat Vastu, that is the Sat Vastu, Sri Dakshinamurtaye Namaha. So, if you see, right from Adi Shankaracharya, let us remember this, Adi Shankaracharya, Sureshwaracharya, then a huge lineage and another one brilliant light in the Sringeri Peetam. Can you name that person? Swami Vidyaranya. And until our recent Mahasannidhanams that we have, they are all not just torch bearers, they are the light themselves who light up the sampradaya so that they light up our way of life and the goal of life. So with that, I would like to say that how every Guru is Shankaracharya. How SARVE GURAVAHA SANKARAATHMAKAM. Kena karanat? Because everyone carries the same sampradaya. Enna sampradaya nambalde appadinu ketta Adi Shankara Bhagavad Padalala kandupidikkapattadalla. Adi Shankara Bhagavad Padalala பிறப்பிக்கப்பட்டதும் ஆதி சங்கர பகவத் பாதாளால பிரகாசிக்கப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட குரு பரம்பரையில், அவிச்சின்னமான குரு பரம்பரையில் வந்த
கர்நாடக ராஜதானியோடைய வித்யா ராஜதானி. அது பெங்களூர் சொல்லக்கூடாது, கர்நாடகத்துக்கு அறிவு சார்ந்த ராஜதானி. அது கர்நாடக ராஜதானி ஸ்ருங்ககிரி. அந்த ஸ்ருங்கேரியில ராஜ்யம் பண்றது யாரு? ஸ்ருங்கக்ஷ்மா பிருன்னிவாசே சுகமுக முனிபை சேவியமானாங்க ஸ்வாங்கச்சாயா விதுதாமிருதகரசுராட் வாகனே வாக்சவித்ரி ஸ்ரீநாத முக்கியா மரவர நிகரைர் மோதத பூஜ்யமானே வித்யாம் சுத்தாம் ச புத்திம் கமலஜ தயிதே சாரதே சத்வரம் தேஹி மஹ்யம், சத்வரம் தேஹி மஹ்யம். அப்படி சிம்மாசன ராஜதானியோடைய அத்தியக்ஷமா ஈஸ்வரியா விளங்கக்கூடிய சாரதா மாதாவை நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாம். இந்த சம்பிரதாயத்தினுடைய பிரகாசமா விளங்குகின்ற அந்த விளக்கா இருக்கக்கூடிய the light of the sampradaya who glow very luminescently the Mahasannidhanams until this parampara. Let us prostrate everyone and take their blessings on this auspicious invocation of Shankara Jayanthi celebrations at Kalika Kshetram. Om Purnamada. Tomorrow I have been given an opportunity by Sharada Mata through the management of Kolkata Sringeri Mutt To give a talk on Kamalaja Daitashtakam. That is the last shloka that I recited about Ma Sharada. It was done by Sachidananda Shivabhinavan Nrsimha Bharati. It is a great work on Mata Sharada. It has both Vedantic content and also the lifestyle that we have to live. So that will be from 6:30. It will be for 1 hour for next 3 days. With that, I rest my walk. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Sadguru Bhai, that was a wonderful exposition by Rangaji Guruji. We are extremely grateful to him. A quick brief of what he told us today. He talked about the roots. He broke it into the bodily roots, the traditional roots and the intellectual roots. And he talked about the perennial unbroken, the Guru Parampara starting from Sadashiva. And he said about the Jijnasa Paripurna Nivritti, that is the Ananda Prapti, that is the ultimate goal of our life. And he said Adi Shankaracharya was the Sampradaya Pravartaka. And he explained to us what is the meaning of the Sampradaya, and a particular objective that is to be truly achieved and which is timeless. And he also he underlined the fact that Shankara did not invent the Sampradaya, rather he propagated the Sampradaya, which was already in existence. And he said, Arivu Niraivu. He did not say the end of knowledge. That is, Vedanta is not an end of knowledge, but it is the Arivu Niraivu. What I really want is our ultimate, objective of every human being, and the wanting is our very nature. And in this wanting, what happens is a misconception arises, and the solution is the realization of the truth, that is which he called it as the moksha. And moksha, he said, is not death. That point has to be noted. And Ananda is our very nature. That he explained to us thoroughly what is that Ananda Swarupam. And Shankara is the one who gave us the knowledge how and what to do and how it is to be undertaken. And he gave us the wonderful example of the Chandogya Upanishad. And Guru is a dispeller of the darkness. He explained to us also by a wonderful sloka. And the compassion in
Adi Shankara Bhattacharya, which word he used was anukampa in him, in his dialogue, in his debate with Mandana Mishra. I mean, the the word he used was anukampa, yet he was compassionate about Mandana Mishra, and he elevated him to the sthana of Sureshwara Acharya, and the tradition he explained to us how to, up to our Sannidhanam, Vidushekara Bharati Sannidhanam, the tradition continued, and it was a wonderful, thoroughly explaining discourse by Rangaji Guruji, for which we really thank him. And I have to mention he is the Pradhanya Sishya of Paramarthananda ji, who hails from the Dayananda Saraswati school, and we are extremely grateful to him once again. And the next 3 days, I request you please spread the message to listen to the wonderful exposition he is going to do on the Kamala Daita. One small addition. Yeah. Swami Dayananda Saraswati, Swami Paramarthananda, and my immediate guru is Swami Brahmayogananda. Thank you. So, Swami Paramarthananda, Swami Brahmayogananda, I was initiated into Vedanta by my guru Swami Brahmayogananda, and now I am also, Swami Paramarthananda ji is also guiding me. So now, what we are looking forward to really is Anugrah Bhashan by our Swamiji, who has been coming here year after year to give his words of wisdom. And I request all of you to stay back and listen to the Anugrah Bhashan of Swamiji and be blessed. विषय क्या रखे? कोई विषय विशेष? करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अरहन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनप्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। ज्योतिर्यद्दक्षिणामूर्ति व्यासशङ्करशब्दितं निगमानन्दं तद्वन्दे सत्यानन्दपदोदितं। नारायण 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 नारायण। आदि शंकराचार्य महाराज की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, और यहाँ
कितने सालों से चल रहा है, क्योंकि हम ही कितने साल से आ रहे हैं। वस्तुस्थिति यदि सोचा जाए, आदि शंकराचार्य न आते तो क्या होता। प्रारब्धवश हम लोग सो यहाँ आते, प्रारब्ध के अधीन सब चल रहा है। ऐसे नहीं मानते हैं कि नहीं? प्रारब्ध नहीं मानते। और आकर के इसी हॉल में एकत्र होते, पर क्या बोलते? बुद्धं शरणं गच्छामि। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जिस समय सनातन धर्म विलुप्त की पथ में चल रहा था, पूरा भारतवर्ष सनातन धर्म के परित्याग करते हुए बौद्ध हो रहे थे। और बौद्ध होने के कारण, बौद्ध होकर के घाटा क्या हो रहा था, क्षति क्या हो रही थी? ईश्वर का ऊपर विश्वास, तो निरीश्वरवाद थोड़ा जिक्र भी किए हैं आपने। अच्छा, बौद्ध आए कहां से? क्यों? हमारे तो परंपरा वैदिक परंपरा है, अनादिकाल से चला रहा है। और अब तक कितने अवतार हो गए हैं। कर्म कांड के द्वारा वैदिक जो ज्ञान, वेद के जो संहिता भाग को लेकर के जो दर्शन शास्त्र रचना की गई है, कौन सा दर्शन? मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन दो हैं। किनका? पूर्व मीमांसा ये दो हैं, जानते हैं कि नहीं? एक है जैमिनी कृत मीमांसा दर्शन और दूसरा है भरद्वाज मुनि कृत कर्म मीमांसा। भरद्वाज कृत कर्म मीमांसा प्रसिद्ध नहीं हुआ है ग्रंथ, परंपरा नहीं चली, पर महर्षि जैमिनी कृत जो मीमांसा दर्शन, जिसका पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, ठीक है? तो मीमांसा के आधार पर जितने वेद अध्ययन करने का मूल उद्देश्य क्या है? कर्मकांड करते हुए स्वर्ग को जाना। आज ही शायद पेपर में पढ़ा या यूट्यूब में देखा, मुझे अभी ध्यान नहीं है, कहीं देखा। लंदन में, विशेषकर इंग्लैंड में, मुसलमान छात्र जो हैं और हिंदू छात्रों को कह रहे हैं तुम मुसलमान बन जाओ, नहीं तो आवेस्ता नहीं जा पाओगे, जन्नत नहीं जा पाओगे। सीखा? इसका मूल कारण क्या है? हम हिंदू लोग जो हैं, आप बुरा मत मानिए, आप लोगों का ही पोल खोल रहा हूं। आप अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा न दे करके कॉन्वेंट में भेजते हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए। पहले तो आप लोगों को और एक चोट देता हूं। अब परिस्थिति क्या हुआ? आप गृहस्थ हो गए कंजूस। क्या जी? एक बच्चा बाई चांस दो, और हम लोगों को चेला नहीं मिल रहे हैं। मठ आश्रम में कोई साधु सन्यासी नहीं है, कई मठ खाली पड़ा हुआ है, मेरे पास मठ है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जन्म भी हुआ है तो उसका नाम कैसा गिनीज में बुक में उठेगा, उसके लिए पिता माता प्रयास करते हैं। किस प्रकार मनुष्य होगा उसकी चेष्टा नहीं है। हमारे प्राचीन काल के प्राचीन परंपरा से जो वैदिक परंपरा चली
और वैदिक परंपरा से जाग यज्ञ आदि के द्वारा व्यक्ति की उन्नति आदि की जो व्यवस्था दी गई, और वह धीरे धीरे इतने पतन मुख में चला गया। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? न पशु बलि। इसलिए कह रहे हैं निंदसि यज्ञ विधेरह श्रुति जातम स्नपयसि पयसि समितो भव तापम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। स्नपयसि क्या? निंदसि यज्ञ विधेरह श्रुति जातम। यज्ञ का उद्देश्य स्वर्ग जाना तक कम हो गया और यज्ञ का उद्देश्य पशु बलि दे करके अपनी रसना तृप्ति का उद्देश्य मुख्य हो गया। एक मेरे जीवन की घटना बताता हूं। वृंदावन में हम थे, अखिल भारतीय संत समिति का, मैं उस समय पूर्व भारत का सेक्रेटरी था। संत समिति के कुछ कार्यक्रम के लिए कुछ पैसा की आवश्यकता पड़ी, तो हम लोग प्रस्ताव दे दिए। मैं ही प्रस्ताव दिया, ये क्या है, हम लोग तो सब महात्मा है ही हैं। कहीं यज्ञ करते हैं तो हम लोगों को बुलाते हैं, प्रवचन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, वो अपना उसमें जो भी करते हैं उनका फंड बन जाता है। तो हम लोग सब महात्मा ही हैं, कोई ऐसे यज्ञ कर दिया जाए और उसमें कोई, हम लोग सन्यासियों को किसी को दक्षिणा देने की जरूरत नहीं, वक्ता सब हम है ही हैं और फंड तैयार हो जाएगा। तो पूज्य वामदेव जी महाराज, परमहंस वामदेव जी महाराज, उन्होंने बोला स्वामी जी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य होना चाहिए भगवत आराधना। यज्ञ का उद्देश्य अर्थ प्रधान नहीं होना चाहिए, इससे हमको पैसा मिलेगा ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये महापुरुषों का वचन। पूज्य वामदेव जी महाराज का नाम सुने होंगे, और मेरे ख्याल से 90 के आसपास जिस समय जगत गुरु जी भारती तीर्थ जी का पश्चिम भारत में यात्रा थी, वृंदावन आश्रम में आए थे, वामदेव जी महाराज के कमरे में जाकर के थोड़ी देर बैठ करके बातचीत की, जो भी है। तो इसी प्रकार यज्ञ का उद्देश्य भगवत आराधना कम हो गई और रसना तृप्ति, अर्थोपार्जन प्रधान हो गया। तो इसके निषेध कैसे किया जाए? तो भगवान बुद्ध अवतार ग्रहण किए और निंदसी यज्ञ विधे रह श्रुति जातम। श्रुति अर्थात वेद से प्रतिपाद होने पर भी उसकी निंदा करने किए, क्योंकि इसके द्वारा यज्ञ विधि को बंद करते हुए पशु बलि जो हिंसा है उसी से लोगों को राहत मिले। और ये भी जान लीजिए, मैं इससे पहले भी कहा हूँ, इसको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, कौन से बुद्ध? गौतम बुद्ध नहीं, भगवान बुद्ध। गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध से भिन्न, गौतम बुद्ध से भिन्न है भगवान बुद्ध। आप श्रीमद् भागवत उठाइए, जहाँ अवतारों का प्रसंग है, वहाँ साफ है, बुद्ध नामो अजनी सुत कीकटेषु भविष्यति। तो 5000 वर्ष पूर्व लिखा हुआ भागवत, और 2500 वर्ष पूर्व आए हैं बुद्धदेव, इसलिए भविष्यति। बुद्ध नाम अजनी सुत, अजनी सुत उनके पिताजी का नाम था अजन, और गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोदन। उनका जन्मस्थान लुम्बिनी, और भगवान बुद्ध का जन्मस्थान कीकटेषु भविष्यति, कीकट प्रदेश अर्थात बिहार के राजगिरी, उसी क्षेत्र में भागवत प्रमाण। तो इसलिए, परंतु हुआ क्या? यज्ञ विधि का तो निषेध कर दिए, वेद की निंदा कर दिए, अब सब के सब बस उसी में आ गए
अब ईश्वर की अस्वीकार करने लगे। क्योंकि ईश्वर को मानने पर कार्ल मार्क्स ने कहा था, मैं ईश्वर का खंडन क्यों करता, ईश्वर को क्यों नहीं मानता हूँ। ईश्वर को यदि मानूंगा, ईश्वर के लिखित जो वेदादि ग्रंथ है उसको भी मानने पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धदेव उसी समय आकर के ईश्वर का भी खंडन किए हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा रचित, नैयायिकों के द्वारा कहना है, ईश्वर वेद के कर्ता हैं ईश्वर। और आपके वेदांत में क्या कहा गया, यस्य निश्वसितमेतत् यजुर्वेद यजुर्वेद सामथर्वाण। निश्वास लेने के लिए जैसे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी प्रकार ही ईश्वर के द्वारा स्वतः उत्पन्न हुआ है। और यथा पूर्वम अकल्पयत्, पौरुष से कहाँ आता है, पूर्व उच्चारणम अनपेक्ष उच्चार्य विषयत्वम पौरुषेयत्वम। पहले कोई कुछ लिखा हुआ है, पहले कोई कुछ कहा है, उस विषय को अपेक्षा न करते हुए जब आप कोई विषय रचना करते हैं तो पौरुषेय हो जाता है। जैसे कालिदास के कुमार संभव आदि। और जो पहले किया गया, जैसे कि कामा फुलस्टॉप जहां जैसे, उसी प्रकारी यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तो ब्रह्मा को भी जिन्होंने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान भी कैसा है, यथा पूर्वम अकल्पयत्। धाता धाता विधाता ब्रह्मा जी जैसे पूर्व कल्प में रचना की थी, उसी प्रकार ही रचना किए हैं। कहीं एक भी अक्षर, आधा अक्षर इधर उधर नहीं किए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा रचित वेद होने पर भी ब्रह्मा जी में कर्तृत्व नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार बौद्ध बुद्धदेव ने क्या ईश्वर का खंडन इसलिए क्या, ईश्वर को खंडन नहीं किए, वो अस्वीकार कर लिए। वो ईश्वर ईश्वर कोई कुछ नहीं है, जैसे हम भी कहते हैं थोड़ा बहुत है, हम ईश्वर को मानते हैं, ये बात नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्य जी कहे, यावत जीवस्त्रयो वंद्य वेदांत गुरुरीश्वर। और ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा द्वित्राणम यदि जायते। ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वैत तत्व के प्रति वासना उत्पन्न होती है, और ईश्वर का अनुग्रह नहीं है तो अद्वैत तत्व की वासना भी नहीं होगी। इसलिए आचार्य क्या कहे, यावत जीवस्त्रयो वंद्यो, जब तक शरीर रहे तीनों वेदांत, गुरु और ईश्वर। इसलिए ईश्वर का हम अस्वीकार नहीं करते हैं, परंतु मायावच्छिन्नत्व नहीं मानते हैं, निरवच्छिन्न नहीं मानते हैं। ईश्वर को निरवच्छिन्न नहीं है, निरवच्छिन्न तो एकमात्र ब्रह्म है, आत्मा है। तो इसी प्रकार पूरा भारतवर्ष बौद्ध धर्म के द्वारा आप्लुत होकर के वेद का निंदा, वेद की निंदा और ईश्वर के खंडन, इसमें व्याप्त हो गया, सब नास्तिकता आ गई। उसी समय भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का आविर्भाव हुआ, और बौद्धों का शून्य की जगह पे इन्होंने कहा शून्य नहीं पूर्ण, शून्य नहीं पूर्ण। कोई ईश्वर को मानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। जो ईश्वर को मानते हैं, वैसे मीमांसक भी ईश्वर को सब नहीं मानते हैं। मीमांसक का जे इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः करके जो आहुति देते हैं, इंद्र कोई देवता विशेष नहीं है। मीमांसकों में कई मत हैं, इसमें वे कहते हैं वज्र हस्त पुरंदर
जो इंद्र को हम आहुति देते हैं, ये मंत्र ही अपूर्व उत्पन्न करता है, कोई इंद्र फिंद्र अलग से नहीं है। ये मीमांसों का कहना है। ये मंत्र शक्ति से ही अपूर्व उत्पन्न होता है, क्योंकि यज्ञ तो मानिए अभी नवरात्रि में किए हैं, शंकराचार्य जयंती में करेंगे, जो भी मानिए, और इसका अपूर्व कब मिलेगा? मरने के बाद। कहाँ रहेगा? कोल्ड स्टोर कहीं है ना, कहीं कोल्ड स्टोर में रखेंगे, हाँ, फ्रीजिंग करेंगे ना, तो इसलिए इसको अपूर्व कहा जाता है। ये अपूर्व रह जाएगा, जो कि मृत्यु के पश्चात जजमान को फल देगा। वेद मंत्र यहाँ पर फलदाता है। यहाँ कोई ईश्वर आदि मीमांसक भी नहीं मानते हैं, सांख्य तो हमारे मानते ही नहीं, वो भी वैदिक दर्शन है। इसलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाराज आकर के उन्होंने कर्म कांड को परित्याग करते हुए ज्ञान कांड को ग्रहण किया, क्योंकि कर्म कांड के द्वारा कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। देखिए, इस्लाम, ईसाई, क्रिश्चियन, इनके जीवन में मुक्ति नहीं है। ये क्या बोलते हैं? स्वर्ग और नरक, दोजख और क्या है? जन्नत, है ना। स्वर्ग जाओ, यही करोगे तो इस्लाम हो जाएगा तो स्वर्ग जाओगे बाप। ये तो जाएंगे क्या जाए, ईसाई हो तो वो भी स्वर्ग जाएंगे। हाँ, हमारे एक पुरानी एक कहानी हम संत लोग कहते हैं, हिंदू, मुसलमान और ईसाई तीनों मित्र थे। अब बढ़िया खीर बनाए, और खीर कौन खाएगा? हाँ, खीर वही खाएगा जो रात को बढ़िया स्वप्न देखेगा। खीर बना कर रख दिए। खीर गरम गरम अच्छा नहीं लगता है ना, ठंडा ही तो अच्छा लगता है। तो सवेरे ठंडा हो जाएगा, जो रात को बढ़िया स्वप्न देखेगा वो कल खीर पाएगा। अब उसमें क्या हुआ? सवेरा हुआ, तीनों उठे, मुँह हाथ धो करके बैठा, अब खीर का कटोरा किसके भाग में पड़े? अब अपना अपना स्वप्न वृत्तांत तो बोलो। मुसलमान जो था बोला, कल हमें मोहम्मद साहब आ करके 7वां आसमान ले गए, अल्लाह तुल्ला के पास, बहुत आनंद मिला, इत्यादि इत्यादि बोलने लगा। अब ईसाई का पल्ला, मैं तो चतुर्थ हेवन गया था, ईसा मसीह से मिल करके आया। अच्छी बात। अब हिंदू बोले, तुमने क्या देखा? बोले, मैं तो आराम से सोया था, हठात नींद खुल गई, देखा जो हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हैं, और उनको देखकर तो मैं तो कांपने लगा। बोले, क्या बात है? बोले, हनुमान जी आकर के बोले, अभी भी सो रहे हो? मैं खड़ा हो गया, क्या करूं? बोले, कहाँ खीर रखा है? निकालो। निकाल दिया। बोले, खाओ। तो खा लिया। बोले, तुमने खा लिया? तो हमको बुलाया नहीं? मैंने बुलाया तो, परंतु तुम तो कोई चतुर्थ हेवन में था और कोई 7वां आसमान में था, और हमारे तो यहाँ ईश्वर सर्वभूतानम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान शंकराचार्य महाराज क्या कहते हैं? ईश्वर को मानते हो बढ़िया बात है, भगवान के मानते हो खूब मानो, और नहीं मानते हो और बढ़िया है। ये हमारे भगवान शंकराचार्य महाराज का सिद्धांत है। यदि ईश्वर के मानते हो कोई आपत्ति नहीं, बहुत बढ़िया है, और यदि नहीं मानते हो तो उससे भी बढ़िया है। बोलो, अपने को मानते हो कि नहीं? है ऐसा कोई माई का लाल कहेगा जो मैं नहीं हूं? है क्या? तुम हो ना, तुम कौन हो? ये अनुसंधान करो। मैं हूं तो मैं कौन हूं? श्लोकार्धेन बोले ना, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव। ये श्लोक हिंदू शंकराचार्य का नहीं है, ये अष्टावक्र मुनि का है।
शंकराचार्य अर्धेक वेदांत डिंडिम में लिए हैं। तो जो भी हो, ये जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव नाम, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का जो सिद्धांत है ये व्यावहारिक नहीं है, व्यवहार नहीं है। क्योंकि व्यवहार में तो हम जैसे चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुमारिल भट्ट जो कह रहे हैं व्यवहार भट्ट नय, कुमारिल भट्ट जैसे कह रहे हैं उसी प्रकार व्यवहार होना चाहिए। और तो और चार्वाक दर्शन को भी भगवान आदि शंकराचार्य महाराज सम्मान दिए हैं। ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, उसके सूत्र के जो उत्थानिका हैं क्या अध्यास भाष्य, उसमें पूछ रहे हैं तत्वज्ञानी जो पुरुष हैं उसका जीवन शैली कैसे रहेगा। बोले पश्वादिभिश्चाविशेषात् यथा ही पश्वादय हरित तृण पुण्य पाणिमुपलभ्य अभिमुखिम आगच्छन्ति दंडोद्यत करान क्रूर दृष्टिं दृष्ट्वा दूरादेव पलायन्ते। जैसे कि पशु कोई हरा भरा घास दे करके उसके सामने जाता है तो खाने के लिए दौड़ाते हैं, और जब देखता है डंडा लेकर के मारने के लिए आंख लाल करके जाता है तो भाग भी जाते हैं। ये नहीं है ब्रह्मज्ञानी हो रहे ओ शेर के गले में जाकर के माला पहनाएगा, हाँ बस शेर से जाकर के आलिंगन करेगा, ये नहीं है। व्यवहार भट्ट नय। अब देखिए आप लोग आत्मा किसको मानते हैं? भले आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो भी वेदांत का शब्द है उसमें अपने को मान लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। पर आपका आई कार्ड जो बनता है, आई कार्ड जो आपका बना है ना, इसी शरीर का ही तो बना। आधार कार्ड बोलिए, वोटर कार्ड बोलिए, कोई भी कार्ड आई कार्ड होना चाहिए, हाँ आइडेंटिटी कार्ड। आपका आई कार्ड कहाँ से आता है? स्थूल शरीर को लेकर ना, इसलिए स्थूल शरीर को बात देकर आप चल नहीं सकते। और हमारे आचार्यों ने कहा है शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। आप जो संकल्प भी करेंगे, कोई पूजा भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, तो इसी शरीर के अनुसार ही तो करेंगे। अमुक वंश में जन्म लिए हैं, अमुक गोत्र हम इत्यादि, अमुक नाम इत्यादि नाम लेकर ही तो अनुष्ठान करते हैं। इसलिए स्थूल जो व्यवहार है उसी को छोड़ करके एक क्षण भी जीवन चल नहीं सकता। इसलिए व्यवहार क्षेत्र में चार्वाक दर्शन को मानिए, और व्यवहार क्षेत्र में कुमारिल भट्ट जैसे कहे व्यवहारे भट्टोदय, कुमारिल भट्ट जैसे कहे। क्यों ना जाग यज्ञ आदि के द्वारा अथा तो धर्म जिज्ञासा जो कहा गया, धर्म जिज्ञासा के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी, तो उसके पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे कुमारिल भट्ट व मीमांसकों के कहना है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो अथ शब्द है, अथ शब्द का अर्थ क्या है? अनंतरीय। किसके अनंतर? किसके अनंतर? वैसे कहा जाता है नित्यानित्य वस्तु विवेक विचार, यह मूत्र फल भोग विराग समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा और मुक्ति की तीव्र इच्छा, मुमुक्षा। पर इतने नहीं है। हमारे सदानंद जोगेंद्र इसको बिल्कुल साफ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उन्होंने कहा अधिकारी तो विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपातत अधिगतो अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल शांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अब देखिए, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, विधिवत
अर्थात गुरुकुल में जा करके यज्ञोपवीत धारण करके गुरु जी के पास बैठ करके षडंग वेद का अध्ययन करें। ये उभय के लिए समान है। अर्थात तो धर्म जिज्ञासा के लिए भी, धर्म जिज्ञासा से पहले भी विधिवत अधीत वेद वेदांग, आपात अधिगत अखिल वेदार्थ, सामान्य रूप से संपूर्ण वेद का तात्पर्य कहाँ है? ब्रह्मात्मैक्य बोध में। अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, भले इसी जन्म में न हो, क्योंकि वामदेव जी को तो गर्भ से ज्ञान हुआ था, सुखदेव जी का तो जनेऊ नहीं हुआ था। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जनेऊ नहीं हुआ है तो विधिवत कहाँ हुआ? तो ज्ञानी थे कि नहीं? भाई हमारे गुरु परंपरा में है, शंकराचार्य जी के परम गुरु जी का भी गुरु है, परमेष्ठी गुरु है। अतएव अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, काम्य निषिद्ध वर्जन, क्योंकि स्वर्ग कामना में करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। क्या बोलते हैं, जेल खाना है कि नहीं? हाथ में क्या करते हैं, लोहे की क्या पहनाते हैं ना, हाथ कड़ी बेड़ी क्या बोलते हैं उसको, हाथ में जेल, हैंडकफ। लोहे का हैंडकफ तो ये लोग पहनाते हैं, और स्वर्ग में जाना माने सोने का हैंडकफ, सोने का हैंडकफ पहने हैं। अरे हे तो हैंडकफ, सोने का होने पर भी हे तो हैंडकफ, अब बंधन में ही हो। और क्षीणे पुण्यमर्त लोकम विशंति, स्वर्ग में जाइए खूब, कैसे? तजथे पुण्यचित लोक क्षीयते, तो जैसे कि इस लोक में धन उपार्जन करते हुए आप लोग ज्यादा अनुभव है, हम लोग तो आप लोगों के ऊपर ही खा लेते हैं, क्योंकि गृहस्थ लोग जो देते हैं भिक्षा वही हमारे जीवन है, सब महात्मा का है, और रोजगार तो आप लोगों को करने पड़ता है। तो जैसे रोजगार किया हुआ वस्तु चिरस्थायी नहीं होता है, खर्च करते हुए घट जाता है, और घटने के पश्चात फिर रोजगार करने पड़ता है। मानिए खेती बाड़ी से जो धान आदि आता है वो भी तो ऐसा ही है ना, हर साल उपार्जन कीजिए तब खाइए। तो इसी प्रकार पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग में जाएंगे तो क्षीणे पुण्य, जब उसका भोग करते हुए क्षीण पुण्य क्षय हो जाएगा, फिर मर्त्यलोकम विशंति। आप देख लीजिए, बहुत पैसा है क्या 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर रहे, पर कितने दिन, जब तक जेब भारी है कि नहीं, फिर आ जाने पड़ता है छोड़ करके। तो इसी प्रकार ही ये कामना के द्वारा निषिद्ध कर्म जो कि करने के लिए निषेध किया गया, शराब न पीबे, शराब मत पीजिए। आजकल तो हमारे सरकार साहब, क्योंकि आबकारी नीति जो है शराब से ज़्यादा इनकम होता है, और हमारे उपनिषद में क्या कहा गया, 5 ब्राह्मण बालक गए महाराज अश्वपति के पास, छांदोग्य उपनिषद का नाम लिए हैं ना, महाराज अश्वपति के पास ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के वे यज्ञ में बैठे हुए थे। ब्राह्मण बालक आए, बोले ठीक है आप आए, अच्छी बात है, पर मैं तो अभी यज्ञ में व्रती हूँ, आप रुक जाइए, आप लोगों को मैं फिर यज्ञ समापन के बाद आप प्रश्न का उत्तर दूंगा। और ये भी ऐसे नहीं रोक रहा हूँ, आपका अपमान नहीं होगा, आप लोग रखिए। ये जो हमारे ऋत्विज लोग बैठे हुए हैं, इनको जितने दान जितने दक्षिणा मिलेगा प्रत्येक को आपको उतने ही देंगे, आपका अपमान नहीं होगा।
बोले ना हम नहीं रहेंगे। ना क्यों नहीं रहेंगे? नौमेस्ते न जनपदे न मद्यप न कदर्य न अनाहित अग्नि न स्वैरी स्वैरी नहीं कुतो नौमेस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। आज इतने गणतंत्र की गणिका तंत्र मुझे मालूम नहीं है, कोई पूरा पृथ्वी में कोई ऐसे कह सकता है मेरे राज्य में चोर नहीं है? नमस्ते न जनपदे न मद्यप, शराब पीने वाला कोई नहीं है। और शराब पीने वाला कोई नहीं कैसे गए? खुद ही तो शराब बेच रहे हैं। दिल्ली में तो और ये है अवकारी नीति, क्या? एक बोतल फ्री। हाँ, एक बोतल खरीदे तो अभी तो बदल गया है। न मेस्ते न जनपदे न मद्यप न कदर्य, कुत्सित कर्म जो करता है ऐसा भी कोई नहीं है। न अनाहिता अग्नि, ब्राह्मण होकर के अग्नि चयन नहीं कर रहा है ऐसा भी कोई नहीं है। न स्वैरिणी न स्वैरी स्वैरिणी को तो स्वेच्छाचारी पुरुष नहीं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री कहां से आ जाएगी? ये राजा चैलेंज कर रहा है। आज है ऐसा कोई? सब अपने को उन्नत मानते हैं, जो जितने चोरी करेगा उतने बड़े उन्नत हैं। तो न क्या है? काम्य निषिद्ध, मांस मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी के प्रति हिंसा न करे। तो इसी प्रकार काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर, इसको छोड़ करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठान नित्य कर्म कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नित्य कर्म किसको कहते हैं? नित्यानि अकर्णे प्रत्यवाय साधनानि, न करने पर प्रत्यवाय होता है, करने पर पुण्य होगा ऐसा कोई नियम नहीं। ये आपका कर्तव्य है। जैसे कि इनकम टैक्स देना, इनकम करने पर सरकार को इनकम देना कर्तव्य है, न दे तो आप अपराधी है। देने पर कोई पुरस्कार मिलेगा ऐसे कोई नियम नहीं है ना? नित्यानि अकर्ण प्रत्यवाय साधना, उसी प्रकार नित्य नैमित्तिक निमित्त पितृवियोग आदि तिथि के श्राद्ध करना, संतान जन्म लिया तो उसके जातेष्टि, जो भी कर्म, अंत्येष्टि तो सब कर देंगे, होता ही है, पर जातेष्टि व चूड़ाकरण इत्यादि जो उपनयन है नैमित्तिक। और प्रायश्चित्त, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ पाप कर्म करता रहता है कि नहीं? कंडनम पेषणम चुल्ली उद कुंभं च मार्जनी पंच सूना गृहस्थस्य पंच यज्ञात विनश्यति। धान कूटते हैं ना, चावल और आटा के लिए पहले तो मुसल से कूटते थे, कीड़ा पीड़ा निकाल देते, और पत्थर का जाती से अपना आटा पीसते थे, कीड़े मड़े निकल जाता था। अब तो सब मशीन में दे देते हैं, यद्गत्वान निवर्तन दे, जो भी कीड़ा पूरा गया वो भी आपका चला आया नवरात्रि का फलाहार बंद करके। तो प्राप्त कहीं ना कहीं हो रहा है। कंडनम पेषणम चुल्ली, रसोई बनाएंगे तो कीड़े मकोड़े मरेंगे। उद कुंभंच मार्जने, पानी जहां रखेंगे जाओगे मरेंगे ही। और झाड़ू लगाते हुए चीटी चाटा नहीं मरेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे इसका क्या है? अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पण, ये जो पंच यज्ञ की व्यवस्था है, हाँ, निर्यज्ञ भूत बलिर्भूत, हाँ, देवताओं के लिए हवन, और निर्यज्ञ अतिथि पूजन, अतिथि की सेवा करना। पर आजकल सावधान, क्यों? अतिथि के नाम पे कोई आतंकवादी आ जाए तो फिर आप क्या सेवा करते रहिए, फिर आप भी सेवित हो जाएंगे।
तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठान, उपासना के बिना वासना की निवृत्ति नहीं है। और उपासना का फल की चित्त की एकाग्रता आएगी। तो उपासना अनुष्ठान न निर्गत निखिल कल्मषता है, अपने हृदय से संपूर्ण कल्मष अर्थात पाप निर्गत हो जाए, तब जाकर के नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है विचार कीजिए। समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, इसका अनुसरण कीजिए। एक एक बोलेंगे, समय लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा। हाँ? अच्छा बोलेंगे मैं थोड़ा खींच रहा था। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आप लोग अनुभव कर रहे हैं। बचपन भी आपका गया है। हमारे भामतीकार कहते हैं, जो मैं बचपन में दादाजी के गोद में बैठता था, अभी वार्धक्य के नाती पोतों को लेकर के गोद में बैठा हूँ। ये भामतीकार कहते हैं, शंकर। तो वहां कह रहे हैं, माने क्या, आपका बचपन पा गया, यौवन गई, और फिर वार्धक्य में आप है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। और शरीर चले जाने के पश्चात भी पिताजी के लिए व आपके लिए भी, आपके पुत्रादि जो श्राद्धादि करते हैं, क्या आप चले गए, मर गए, खत्म हो गए इसलिए कर रहे हैं? आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, आत्मा को के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जो श्राद्ध तर्पण आदि क्रिया हैं, हमारे विधान दिया गया है। इसलिए नित्य क्या है? एकमात्र चैतन्य सत्ता ही नित्य है। सत्य क्या है? भगवान भाष्यकार जो सत्य शब्द का परिभाषा किए हैं, ये नहीं जो आप आंखों में देखें हैं। आंखों में देखने वाला को तो आई विटनेस मानते हैं ना वर्तमान, वही यथार्थ है क्या? अब सोच लीजिए, जो आप स्पर्श करके जानते हैं वही यथार्थ है कि नहीं? एक बाल्टी पानी रख लीजिए, एक और बर्फीला पानी रखिए, एक और गर्म पानी रखिए, दोनों में 2 हाथ डुबाइए और दोनों हाथ को उठा करके जो समान तरल पानी है नातिशीतोष्ण, उसमें दोनों हाथ डालिए। क्या लगेगा? एक को गर्म लगेगा, एक को ठंडा लगेगा। जो बर्फीला जल से निकला हाथ है उसको तो गर्म लगेगा, और जो गर्म जल से आया है हाथ, आपका ही दोनों हाथ, मेरा नहीं। और एक ही जल है, एक हाथ बता रहा है गर्म जल है, एक हाथ बताता है ठंडा जल है, कौन सा मानेंगे? इसलिए प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जो आंख रस्सी में सांप दिखाता है, सीपी में चांदी दिखाता है, उस आंखों को क्या विश्वास करेंगे? अब देख लीजिए। इसलिए नित्य क्या है? भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, सत्यत्वम त्रिकाल अबाध्यत्वम, तीनों काल में जो बाधित नहीं होता है वो सत्य है। चाहे बचपन में बोलिए, चाहे वार्धक्य में बोलिए, चाहे मरण के पश्चात भी आत्मा में कोई बाधित नहीं होता। आत्मा नहीं है ऐसा कोई आज तक कहा नहीं। अनित्य और नित्य शरीर आदि जो हैं, आत्मा के द्वारा हम जिन वस्तुओं का अनुभव करते हैं, इसलिए अद्वैत सिद्धि का मिथ्यात्व का 3 हेतु दिए हैं। जगन मिथ्या, जड़त्वात्, दृश्यत्वात्, परिच्छिन्नत्वात्। तो इसी प्रकार हमारे जो अनित्य वस्तु हैं, ज्ञान का जो ज्ञेय है, दृश्य का जो दृक् का जो दृश्य है, ये सब अनित्य हैं।
एकमात्र दृक् स्वरूप जो चैतन्य सत्ता, जो स्वयं प्रकाश आत्मा, वही नित्य, नित्य अनित्य। यह मूत्र फल भोग विराग, हाँ बोले स्वर्ग जाना है और यहाँ भी बहुत संपत्ति इकट्ठा करके भोग करना है। कितने संपत्ति इकट्ठा करेंगे? रावण से ज्यादा, कुंभ क्या दे, हिरण्यकशिपु से ज्यादा, हिरण्याक्ष से ज्यादा। हिरण्याक्ष किसको बोलते हैं जानते हैं ना? क्या किसको बोलते हैं? हाँ हिरण नहीं, हिरण्य अक्षिणी यस्य हिरण्यम सुवर्णम। हिरण्य शब्द का अर्थ सोना है, सुवर्ण है गोल्ड। हिरण्य अक्षिणी यस्य, जिसका सब समय गोल्ड सोना चाहिए, सोना चाहिए, सोना चाहिए, संपत्ति ले रहा है। जो पैसा पैसा करते हैं ना, वो सब हिरण्याक्ष है। और हिरण्य कशिपु, कशिपु माने क्या? सज्जा, बिस्तर, जहां लेटते हैं ना रात को, वो बिस्तर का नाम है कशिपु। हिरण्य तो सोने के बिस्तर पे, रुई के नहीं है, सोने के बिस्तर पे जो सोता है वो है हिरण्य कशिपु। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, यह मूत्र फल भोग विराग, यह अर्थात यहाँ हमको बहुत संपत्ति मिले, बहुत आनंद मिले, बहुत भोग करेंगे। और अमूत्र स्वर्ग, स्वर्ग जाकर के और भोग करेंगे। क्या 72 पुरों का दर्शन करेंगे, भोग करेंगे। अरे भाई, हमारे क्या दे ऋषिकेश में के संत थे, एक सज्जन गए, बोले कंबल दान किए। अभी नहीं, माघ महीना में। हाँ, अभी तो कंबल कितने आराम लगेगा जानते ही हैं। तो बोले काहे को भाई, हमें तो कोई जरूरत नहीं है ना। हमने सुना आपको यदि हम एक कंबल दान करेंगे तो स्वर्ग जा करके 100 कंबल मिलेगा। अच्छा ये बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक कंबल तो अभी रख लो, 99 बाद में देखेंगे। यहाँ मूत्र फल भोग विराग, स्वर्ग में जाकर के सुख भोगेंगे, ऐसी भी इच्छा नहीं रहे। वर्तमान में सुख चाहिए, ये भी इच्छा न रहे। यहाँ मूत्र फल भोग विराग, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। सम किसको कहते हैं? इंद्रिय संयम, मन को संयम, सम दम। अंतर इंद्रिय संयम, मन को संयम, दम। सम उपरति, कुछ नहीं चाहिए, बस किसी वस्तु के प्रति आकांक्षा न रहे। उपरति, भामतिकार उपरति को आकांक्षा रहित कहते हैं और विवरणकार कहते हैं उपरति अर्थात संन्यास। सम दम उपरति तितिक्षा, शीत एवं ग्रीष्म में तितिक्षा। अब तो पता चल जाएगा गर्म में कितने तितिक्षा कौन कर रहा है। ये बात नहीं है। तितिक्षा में एक कहा जाता है राग द्वेष से रहित, कि कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, निंदा स्तुति से अपने को रहित। ठीक है, तो तितिक्षा समाधान माने समाधि अर्थात एकाग्रता। योग दर्शन का क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध करना ही तो कैसे होगा? समाधि के द्वारा। और श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु जी जो वेदांत का वाक्य कहेंगे उसके प्रति श्रद्धा। श्रद्धा में है कि नहीं? रात को सोते हैं सवेरे जगने के लिए, है कि नहीं? कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं कि नहीं? नाई आता है और उस तरह लेकर के आपका बाल बनाने जाता है तो उसके सामने सिर दे देते हैं कि नहीं? विश्वास से, ना कि हमारे गला कब काट दे, ऐसी विश्वास रहता है। तो समाधान श्रद्धा, ये छठ संपत्ति। फिर मुक्ति की तीव्र इच्छा। जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे
तब आपको पहले ऐसे अधिकारित्व उपार्जन करना जरूरी है, नहीं तो पढ़ लीजिए। काशी संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांत विभागाध्यक्ष, अपनी दर्शन किया हो उनका, रघुनाथ शर्मा जी थे। उन्होंने एक बार मेरे गुरुजी वृंदावन में स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज के पास गए थे, तो मैं उनकी आश्रित हूँ। तो वहाँ जाकर के उन्होंने कहा, बोले महाराज अद्वैत सिद्धि गौड़ ब्रह्मानंद तक ऐसा कोई पंक्ति नहीं है जिसका अर्थ मैं नहीं जानता हूँ, जायस्त कभी ना किया हूँ। कितने संत महात्माओं को हमने अद्वैत सिद्धि गौड़ ब्रह्मानंद आदि खंडन खंड खाद्य शिक्षु की तो उससे छोटे स्तर का है, सब पढ़ाया हूँ। परंतु मेरी विधवा कन्या की ओर जब देखता हूँ मेरा दिल जैसा हाहाकार। अब देखिए, देवर्षि नारद सनत कुमार जी के पास गए और क्या कहा उन्होंने, मैं ऋग्वेद यजुर्वेद साम अथर्व आदि सर्वजन विद्या इत्यादि देव विद्या सब जानता हूँ, बहुत अध्ययन किया हूँ, मैं मंत्रविद, किंतु तत्वविद नहीं हूँ। सोहम भगवत शोचामी माम शोकस्य पारम तारयतु। हे भगवान, मैं शोकग्रस्त हूँ, मुझे शोक से पार पहुंचाइए। हमने महत्पुरुषों से सुना है, तरति शोकम आत्मविद, मैं मंत्रविद होने पर भी आत्मविद नहीं हूँ, अतएव हमको तत्वज्ञान प्रदान कीजिए। अर्थात कुछ अध्ययन के द्वारा तत्वज्ञान नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु के पास से अध्ययन करने पड़ता है। मानो आजकल से तो पढ़े लिखे होते हैं ना, पढ़ी लिखी लड़की ससुराल गई, सास कही बेटी मैं थोड़ा मंदिर में पूजा देकर आ रही हूँ, थोड़ा नाश्ता बना लेना। आकर के छत नाश्ता करेंगे, ठीक है, क्या बनाऊं, ना पूड़ी बना देना और आलू की सब्जी बना देना, ठीक है। और कुकिंग गाइड लेकर गई थी, कभी तो भोजन बनाई नहीं थी। अब कुकिंग गाइड खोल करके अपना कारोबार शुरू कर दिया। तब सास आ गई, बोले बेटी भोजन बन गया? बोले माँ पूड़ी तो बन गई पर सब्जी नहीं बनी है। बोले क्यों? ना कुछ समझ में थोड़ा नहीं आया। बोले क्यों, बता क्या समझ में नहीं आया? बोले लिखा जी आलू मंगाओ तो आलू ले लिया, 4 फल करके काट लो। बोले ठीक है, उसके बाद क्या धो दो, यही समझ में नहीं आ रहा है। बोले ना समझने की क्या बात है, धो देना। बोले धोने के लिए तो लिखा हुआ है, सर्फ से धोंगे साबुन से धो, ये लिखा नहीं है। इसलिए ग्रंथ पढ़ करके कभी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो स गुरुमेवाभिगच्छ समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। केवल श्रोत्रिय होगा तो ही प्रोफेसर की तरह होगा, बढ़िया समझा देगा, प्रवचन बढ़िया कर देगा, किंतु अनुभव कराने में समर्थ नहीं रहेगा। आज यदि ब्रह्मनिष्ठ भी हो, तत्वज्ञान प्रदान करने में समर्थ हैं, पर अर्जुन के देखिए द्वितीय अध्याय में कह रहा है साधिमाम शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम प्रपन्नम। और जब बोल रहे हैं युद्ध करना गांडीवम हस्तते हस्तात्वचैव परिदह्यते बेपत्तुष्ट शरीर में रोम हर्षत जायते। क्या इधर तक कह रहे हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम, मैं तुम्हारे शिष्य हूं, हमको शासन करो। परंतु उधर क्या बोल रहे हैं, जब गुरुजी बोल रहे हैं युद्ध कर, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। कितने स्टेप गया, दूसरे अध्याय से अष्टादश अध्याय तक जब पहुंचे, विश्वरूप दर्शन कर दिए, भक्ति जो ज्ञान जब सब चला, तब जाकर के कह रहे हैं नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोषि
करिष्ये वचनम तब, कब जाकर बोले? अष्टादश अध्याय में। इसलिए गुरु जी के सानिध्य में गए बिना, क्यों? आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसके आचार्य सन्निधान नहीं है वो व्यक्ति तत्व ज्ञान लाभ नहीं कर सकता। और उन्होंने कह दिया तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु जी जो उपदेश दें, क्या क्या है हमारे महावाक्य? 4 महावाक्य हैं। एक तो मैं ही हूं, है ना? प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। आप जो नैष्कर्म सिद्धि किए है ना, नैष्कर्म सिद्धि के ऊपर चित्सुखाचार्य जी को टीका है, उसका संपादन मैं किया हूँ। वही मेरा पीएचडी था। गुरु जी को तो दिया हूँ, श्रृंगेरी में जाकर के दोनों गुरु जी को दिया हूँ। अब मणि जी के हाथ में पहले भेज दिया था, फिर मैं जब गया था तो दोनों गुरु जी को दिया हूँ अपने हाथ। तो जो भी हो, तो यहाँ कह रहे हैं क्या है? अब ब्रह्म ब्रह्म क्या कहते हैं? जैसे वृंदावन में गोपियाँ जा रही, उस समय कुछ महात्मा बैठ करके कुछ ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं। तो किसी गोपी ने पूछे, अरे गोपी क्या ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हैं? बोले होगा कोई लाला का साला। है तो ये ब्रह्म का निरूपण करते हुए हमारे महावाक्य हैं अयम आत्मा ब्रह्म, न कि प्रज्ञानम ब्रह्म पहले लिखे। पहले हमसे शुरू कीजिए। हाँ, प्रकृष्ट जो ज्ञान है वो ब्रह्म है। ज्ञान क्या है? सामान्य ज्ञान तो व्यवहार में सब चल है, और प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान का कहीं विलोप न हो। ज्ञान किसको कहते हैं? देखिए हमारे यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम क्यों कहा गया? कोई सत्यत्व विशिष्ट कोई पदार्थ नहीं है ब्रह्म। मिथ्यात्व के निराकरण के लिए सत्यत्व कहा गया। ज्ञानम सत्यम ज्ञानम, ज्ञान कहने का मतलब क्या है? चेतन है, जड़ नहीं है। नैयायिकों की जो आत्मा है वो जड़ है, उसमें ज्ञान अर्थात बुद्धि को वो बुद्धि मानते हैं, ज्ञान को गुण मानते हैं। उसके सन्निधान से आत्मा में चेतन आता है। पर आपके वेदांत में आत्मा और ज्ञान कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही चेतन है, अर्थात आत्मा जड़ नहीं है। इसलिए कहा गया ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम, माने परिच्छिन्न नहीं है ब्रह्म। आत्मा ही ज्ञान है। इसलिए प्रकृष्ट जो ज्ञान जिसका कभी विलोप नहीं हो सकता है वही ब्रह्म है। भाई कहाँ है? अयम आत्मा ब्रह्मा। अयम आत्मा, यह जो आत्मा है जिसको आप मनुष्य के रूप में बात जो कुछ मानते हैं कि क्या बोल रहे हैं, पिपी ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु। हाँ, भगवान शंकराचार्य जो कह रहे हैं ना, मनुष्य विजृंभते, तो ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु, ब्रह्मा से शुरू करके चींटी तक जो चेतन पदार्थ विद्यमान हैं, जिसको प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं, अयम आत्मा, यही आत्मा ही ब्रह्म है। बोले इसको आप कैसे मान लेंगे? यही आत्मा ही ब्रह्म है। तो उपदेश दे रहे हैं तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। अर्थात एक उपदेशात्मक है, निरूपणात्मक महावाक्य, निदर्शनात्मक महावाक्य। निरूपणात्मक महावाक्य हुआ प्रज्ञानम ब्रह्म, निदर्शनात्मक महावाक्य हुआ अयम आत्मा ब्रह्म,
और उपदेशात्मक महावाक्य हुआ तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, त्वमेव तत् असि, तुम ही वही ब्रह्म हो। इसका मनन करते हुए शिष्य अब अनुभव कर रहा है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, 4 महावाक्य का इस प्रकार एक सामंजस्य किया जा सकता है। ठीक है, अब बंद करें। अच्छा, आप लोग भी सोचते हैं बाबा को अब छोड़ेगा हम जाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, अब अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। Sri Gurubhyo Namaha. It will be extremely futile on my part to say anything about Swamiji's discourse. I mean, what he has today said is a complete dissertation which we can be thinking about it for months to come, for years to come. And we will only wait for Swamiji to come next year also to again brush us with his wisdom. Only with that, I thank you all for being with us, and I request our Narayanji, our treasurer, to propose a vote of thanks for today. And tomorrow, the Shankara Jayanthi Utsavam will begin in the morning with Ganesha Aradhana, invoking Lord Ganesha, and then you must have received the notice. In any case, I'll quickly go through it. Morning at 5 am will be Mahaganapati Homa Upanishad Parayanam. 7 o'clock will be Prana Pratishtha. Maharudra Sankalpam, Acharya and Ritvik Vamam, Mahanyasa Japa Ekadasa Rudrabhishekam. And 12:30 noon we will have the Mahadeepa Radhana, and followed by, of course, Prasada. And evening at 5:30 we'll have evening puja and stotra recitation by Sharda Mandali. And 6:30 we'll have the pravachanam by our Sri Rangarajan Kalyan Raman from Chennai, or Guruji, and Kamalaja Daishtakam. So I request all of you to come in very large numbers. Please, the hall should be totally be full. I request you to please come, and I request you to please partake prasadam. Thank you very much. Yeah, Sri